Welcome back. I am Vishali Upadhyay from DPS Haldwani, Lamachor. Today we are going to start our TPPS 1 of chapter 13, A Shelter So High. As you know that our PT2 is going to start very soon. So let's start the first DPPS of chapter 13 of class 5th. So I am writing, you will also write with me, okay? Write at the top DPPS 1, chapter 13. This TPPS we are doing of chapter 13. So as you know that I'll give you 3 chapters, that is chapter 13, chapter 14 and chapter 16. Because I have skipped chapter 15, that is why I'll give you chapter 16. So in your PT2, 3 chapters are coming. So first we will do our first chapter of chapter 13, DPPS 1. So write first question. Fill in the blanks. First is Gaurav, Jani went on a long journey with his motorcycle named See, in this TPPS, I'll give you some fill in the blanks, some true false and some question answer which will help you to learn for the PT2. Okay. So, firstly I'll write fill in the blanks and I will not write the answer. We will discuss the answer, then I will write. Okay. So, first I am writing all the questions. B. The distance between Mumbai and Delhi is dash kilometer. C. Delhi is Delhi looked just like dash. D is in dash there were high snow-capped mountains and cold flat ground. So these are our fill in the blanks. Okay. Now I have written the question.
Now we will discuss the answer. Okay. So first one is Gaurav Jani went on a long journey with his motorcycle named. In the chapter we have learned that Gaurav Jani always used to bring their motorcycle everywhere. So what his motorcycle name, उसकी मोटरसाइकिल का नाम क्या था? That is Lunar. L, that is L, okay? Don't think that is a H. Luner, that is Lunar. Now second is the distance between Mumbai and Delhi is dash kilometer. So Delhi और मुंबई के बीच का डिस्टेंस कितना है? So the distance is 1400 kilometer. Now next is Delhi looked just like. अब गौरव ने चैप्टर में बताया था कि जो दिल्ली था वो लगभग किसकी तरह लगता था? वो कहाँ रहता था? इन मुंबई. तो when he went Delhi तो उसे ऐसा लगा that it just looked like a Mumbai. So answer is Mumbai. Okay. Last is in dash there were high snow-capped mountains and cold flat ground. क्या था वहां पर? वो बताता है ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्नो से कवर्ड, बिल्कुल स्नो थे, सॉरी माउंटेन्स थे, जो पहाड़ियां थी वो स्नो से पूरी कवर्ड थी और बहुत ज्यादा कोल्ड था और जो ग्राउंड था वो क्या था? एकदम फ्लैट था. तो वो कौन सी जगह थी? दैट इज लद्दाख. Ladakh. Okay. So these are our fill in the blanks. Please note it down. Now our question 2 is write true or false. Question 2, write true or false. Now A1, the same process we will do. Firstly we will write all the question and then we will discuss the answer. So first is Ladakh gets very little rainfall. I know most of you know the answer because this one we have done in class 5th also. So the second is Gaurav Jani's journey took about 4 months. Third is Changpa tribe has only 500 people. Next is Changpas move from one place to another. This is C and this is D.
So now these are your true false. 4 fill ups I have given and 4 true false I have given. Okay. So we will discuss the answer. First one is Ladakh gets very little rainfall. This we have learned in class 5th also. So I know most of you know the answer. So what is the answer? Tell me the answer. Yes, the answer is true. लद्दाख में बहुत ही little rainfall होती है because there is a lot of cold there and you can see everywhere there is a snow. So that is true. Second is Gaurav Jani's journey took about 4 months. गौरव जानी की जो जर्नी थी उसने कितने मंथ्स लिए थे? दैट हैज टेकन 4 मंथ्स. टेल मी द आंसर. नो, दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट थर्ड वन इज चंपा ट्राइब हैज ओनली 500 पीपल. क्या चंपा ट्राइब जो जाति थी उनकी, ठीक है, जो ट्राइब थी चंपा लोगों की, उसमें सिर्फ 500 पीपल थे? वी हैव लर्न हाउ मेनी पीपल्स दे आर ओनली 5000 पीपल्स. ओके, सो दैट इज ऑब्वियस फॉल्स. लास्ट इज चंपा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. चंपा के जो लोग थे, ठीक है, चंपा जो लोग थे वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे. वी हैव लर्न इन द चैप्टर व्हाट दे आर डूइंग. दे आर कीपिंग देयर एनिमल्स विद देम एंड दे आर कीपिंग देयर बेसिक necessary things and they move from one place to another. ठीक है, so that is true. So this is your true false. Please note it down in your notebook. After that, we will start the question answer. Now, our question third is answer these following questions. So, please note it down. Third is answer these following questions. A is Champa people live in tents. What do they call their tents? Means Champa tribe where they are living, or we can say the tents where they were living. जिस tents में वो रहते थे उस tent को क्या बोला जाता है? So the answer is the tents of the Champa are called, what we called? Tell me. The answer is रिबो. ओके, जिस टेंट पे चंपा लोग रहा करते थे उन टेंट को क्या बोला जाता है? रिबो. नाउ बी क्वेश्चन. B is near the tent Champas
keep their animals full stop. What do they call this place? Question mark. जिस टेंट में चंपा लोग रहते थे, ठीक है, उसके पास में जो उन्होंने एनिमल्स के लिए बनाया था, जहां पर उनके एनिमल्स टेंट के बगल पे रहा करते थे, ठीक है, उस जगह को क्या बोला जाता था? सो द आंसर इज द प्लेस where Champa's okay Champas keep their animals are called what we call, do you know that? द प्लेस वेयर चंपा, जहां पर चंपा रहती थी उसके बगल में जो जगह होती थी जहां पर एनिमल्स रहा करते थे उसे क्या बोला जाता है? लेखा. ओके, लेखा. द स्पेलिंग ऑफ लेखा इज LEKHA. Okay, so this is your two question answer, A and B. Two more question answer were there. Firstly, please note it down these two question answers. Now, question number C. What things attract tourists to Srinagar? The question is, they were asking कि what are the things that attract tourists to Srinagar? श्रीनगर में ऐसी कौन सी चीजें थी जहां पर टूरिस्ट आते थे और वो चीज उन्हें अट्रैक्ट किया करती थी? सो द आंसर इज tourists are attracted to the famous and beautiful houseboats in Srinagar. ऐसी कौन सी चीज थी जो श्रीनगर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया करती थी? द फेमस, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो वहां की फेमस थिंग थी वो थी हाउस बोट. आपने चैप्टर में पढ़ा था दैट यू हैव लर्न in Srinagar we have seen so many houseboats and that are different to each other. वो सबसे एक दूसरे से क्या थी? Different थी and they are so beautiful as well. ओके, सो यही एक चीज थी जो टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया करती थी. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज so special about pashmina shawls?
Now our next question is कि what is so special about पश्मीना शॉल. पश्मीना जो शॉल है उसमें सबसे ज्यादा स्पेशल क्या था, स्पेशल बात ऐसी क्या थी पश्मीना शॉल में. So the answer is it is very thin yet as warm as 6 sweaters. So पश्मीना शॉल में सबसे ज्यादा स्पेशल क्या था कि वो बहुत ज्यादा थिन होती. जैसे मोस्टली हम जो शॉल्स लेते हैं वो थिक होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है. लेकिन जो पश्मीना शॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, और वो जितनी ज़्यादा थिन होती है उतनी ही ज़्यादा वार्म होती है, यानी कि उससे गर्माहट आती है, वो गर्म होती है, ठीक है. इसके अलावा मतलब वो इतनी ज़्यादा वार्म होती है या इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि आप एक शॉल को ओढ़ लीजिए और उसके, और अगर आप कंपेयर करेंगे 6 स्वेटर्स को, अगर आपने 6 स्वेटर पहनी है तो 6 स्वेटर्स पहन के आपको जितना गर्म लगता है उतना ही आपको गर्म किस में लगेगा, एक पश्मीना शॉल को ओढ़कर, ठीक है. तो वो इतनी ज़्यादा वार्म होती है, इतनी ज़्यादा गर्म होती है. So with this we have completed 13 chapter TPPS first. Okay, so I hope you have understood this chapter nicely and clearly. Please note it down all the question answers, fill ups and true false. It will help you to understand the chapter easily. Okay, and if you have any problem you can see the TPPS as well as you can see the video. Now we will meet in our next video with the next TPPS. Till then, bye bye. Be safe and be healthy.